lecture number 21 with BS Zoology 4th semester Animal Form and Function 2. Today our last lecture of the subject Animal Form and Function 2, last chapter number 5. Chapter number 5, circulatory system and gaseous exchange and immunity we have started, and this is the last topic of your syllabus, that is Animal Form and Function 2. Today our main topic of discussions, lung ventilation and human respiratory system. First of all, actually what is lung ventilation? That is very important, long question. Lung ventilation क्या है? The process of breathing, inhalation and removal of gaseous exchange out of the body, exhalation, both inhalation and exhalation. The process of breathing taking place within the lungs through the lungs is called lung ventilation. एयर ब्रीथिंग एनिमल्स विद लंग्स बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स. अब जो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो लंग्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिनमें ब्रीथिंग का प्रोसीजर लंग्स के थ्रू होता है, उनमें कौन से स्टेप्स जो हैं वो फॉलो आउट करने होते हैं. एयर मूव्स बाय बल्क फ्लो इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इन द प्रोसेस कॉल्ड वेंटिलेशन. अब ये टू टाइप्स की वेंटिलेशन होती है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. द इनटेक ऑफ oxygen is called inhalation, while the removal of carbon dioxide out of the body will be called exhalation. Next, oxygen and carbon dioxide diffuse across the respiratory surface of the lungs tissue from the pulmonary capillary. So the mainly exchange of gaseous oxygen and carbon dioxide take place through the capillary. There is the network of capillary present between these living organisms for the purpose of gaseous exchange. At systematic capillaries, oxygen and carbon dioxide diffuse between the blood and interstitial fluid in response to concentration gradient. So there is the difference between concentration gradient. If the internal carbon dioxide more, then the procedure of exhalation will be occur. Carbon dioxide will be removed, exhaled from the body, and there is the deficiency of oxygen in the body, then the procedure of inhalation will be done. More oxygen will be diffused into the body. So inhalation and exhalation both procedure occur in the lung ventilation. Next, oxygen and carbon dioxide diffuse between the interstitial fluid and body cell, between the internal and environmental take place gaseous exchange, oxygen and carbon dioxide. So this was the lung ventilation, the procedure of breathing, the procedure of inhalation and exhalation take place occur through the lungs is called lung ventilation. Next, आज का जो हमारा second topic है, that is the last topic, human respiratory system. That is very and too much important long question. Write a detailed note on the human respiratory system. What is human respiratory system, how human respiratory system work, and describe human respiratory system. So human respiratory system is consist on two main portion. Mainly इसमें दो portion involved होते हैं. Air conducting portion जिसमें air की inflow and outflow movement होती है. Gas exchange portion जिसमें mainly जो है gases का exchange होता है, oxygen and carbon dioxide, and last that is gas transport. First of all, air conducting portion, air normally enters and leaves this system through nasal or oral cavity. Nasal cavity through gases का exchange होता है. From this cavity, air moves into the pharynx, which is the common area for both the respiratory and digestive tract. So pharynx is used both for respiratory and digestive functions. Next, during inhalation, when living organism inhale oxygen into their body from the environment, during inhalation air from the larynx move into the trachea, which branches further divided into right and left bronchi, also called bronchioles. Next, second portion, that is the gas exchange portion. In this portion, the exchange of gases take place between the environment and the body. Small tubules called alveolar ducts. Alveolar ducts connect the respiratory bronchioles to the grape-like outpouching called alveoli. Like a grapes, इसकी एक outpouching थैली होती है जो कि इसके साथ connected होती है, जिसको क्या कहते हैं? alveoli.
Alveoli are the functional units of the lungs. That is very important MCQ. What are the functional unit of lungs? Alveoli. अगर alveoli नहीं होंगे तो lungs जो हैं ये work नहीं करेंगे. तो lungs के जो functional unit है जो कि actually gaseous exchange में help out करते हैं, these are alveoli. Collectively, alveoli provide a large surface area for the gaseous exchange. Alveoli are the tubes, ducts that provide too much surface area. जितनी alveoli का surface area ज़्यादा होगा, gaseous का exchange भी ज़्यादा होगा और breathing का procedure भी उतना ही fast होगा. Next, surrounding the alveoli are many capillaries for gaseous exchange. अब alveoli के around बहुत ज़्यादा network of capillaries present होती हैं that enhance and support the respiratory system and gaseous exchange. एंड देन लास्ट वन दैट इज़ द गैस ट्रांसपोर्ट. अब गैस की ट्रांसपोर्ट जो है वो और कौन से मेथड्स के थ्रू होती है और कौन से सिस्टम्स हैं जो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प आउट करते हैं. मैनी सिस्टम दैट इज़ ट्रैकिया, क्यूटेनियस एक्सचेंज, गिल्स, लंग्स हेल्प इन गैसेस एक्सचेंज. ये तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि ट्रैकिया के थ्रू, क्यूटेनियस के थ्रू, गिल्स और लंग्स के थ्रू तो बेशक वेंटिलेशन, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन और ब्रीथिंग का प्रोसीजर होता है, लेकिन एडिशनल कौन से सिस्टम्स हैं जो कि गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प आउट करते हैं. दीज आर रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स. रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स आर आल्सो टू मच इम्पोर्टेंट फॉर गैसेस एक्सचेंज. दैट इज़ हीमोग्लोबिन पिगमेंट, हीमोसायनिन पिगमेंट, hemetrine and chlorocrucrin pigments involved in the exchange of oxygen and carbon dioxide between environment and the body. So I repeat it again. Today our topic of discussion lung ventilation. First of all, lung ventilation क्या होती है? The exchange of gases through the lung. The procedure of breathing take place within the lung is called lung ventilation. Both inhalation and exhalation. The intake of oxygen is called inhalation, while the removal of carbon dioxide from the body is called exhalation. Both inhalation and exhalation phenomena occur in the lung ventilation. Air breathing animals with lungs based on the following principle. Air moves by bulk flow into and out of the lungs in the process called ventilation. In ventilation, both phenomena fulfill inhalation and exhalation. Oxygen and carbon dioxide diffuse across the respiratory surface of the lungs tissue from the pulmonary capillaries. At systematic capillaries, oxygen and carbon dioxide diffuse between the blood and interstitial fluid in response to concentration gradient. Pulmonary and systematic circulation में gaseous का exchange होता है according to their concentration gradient. अगर ऑक्सीजन की deficiency है तो inhalation का procedure ज़्यादा होगा और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की excess quantity present है तो exhalation का procedure fulfill होगा. नेक्स्ट हमने बात करनी है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है डिफ्यूज़ करती हैं बिटवीन इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड टू द एनवायरनमेंट. नेक्स्ट last topic that is very important, write a detailed note on human respiratory system. Human respiratory system is mainly consists of two portion, air conductive portion and gas exchange portion. Air conductive portion में air normally enter and leave the system through the nasal cavities. एक्चुअली नोज़ के थ्रू, नथनों के थ्रू मेनली जो है ऑक्सीजन एंटर करती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीव करती है थ्रू द बॉडी. नेक्स्ट फ्रॉम द कैविटीज एयर मूव्स इनटू द फेरिंग्स. फेरिंग्स क्या है? विच इज़ द कॉमन एरिया. एक ऐसा एरिया है बोथ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव फंक्शन परफॉर्म करता है. नेक्स्ट ड्यूरिंग इनहेलेशन एयर फ्रॉम द लैरिंग्स मूव इनटू द ट्रैकिया एंड ट्रैकिया फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रोंक्यूल्स. गैस एक्सचेंज पोर्शन क्या है? स्मॉल ट्यूब्यूल्स कॉल्ड एल्वोलाई डक्ट्स. These connect respiratory bronchioles to grape like और ponchi called alveoli. Alveoli जितनी ज़्यादा large होंगी gaseous exchange उतनी ही ज़्यादा fast होगी. Alveoli क्या हैं? These are the functional unit of lungs, provide too much surface area for the gaseous exchange, and alveoli surrounded by the network of capillaries which enhance the gaseous exchange between the capillaries. Next, गैस ट्रांसपोर्ट. अब कौन से ऐसे फर्दर एंड एडिशनल सिस्टम हैं जो कि गैस की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प आउट करते हैं? एज यू ऑलरेडी नो, ट्रैकिया, क्यूटेनियस, गैस एक्सचेंज, गिल्स, लंग्स के थ्रू तो रेस्पिरेशन होती ही है, लेकिन फर्दर जो है वो कौन से ऐसे सिस्टम हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प आउट करते हैं या रेस्पिरेशन को इन्हांस करते हैं? दीज आर द रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, हीमोग्लोबिन, हीमोसायनिन, हेमेट्रिन एंड क्लोरोक्रुक्रिन इन्वॉल्व इन द गैसेous exchange oxygen and carbon dioxide between the environment and their body.
So this was our topic of discussion. I hope so you understand very clearly the subject, animal, form and function too. There were the 5 chapters we have discussed in detail. If you feel any query in any chapter, in any topic, so you can ask question at text and at Zoom and meeting. I hope so you clearly this subject. Allah Hafiz, take care of you.